Hi, my dear class 10. So welcome to the part 3 of chemical reactions and their equations. अगर किसी ने पहली दो वीडियोस नहीं देखी हैं तो प्लीज जाके देखिए. आज के वीडियो में आज हम डिस्कस करने वाले हैं प्रिवेंशन ऑफ कोरोजन, नंबर सेकंड रैंसिडिटी, एंड विद दिस वी आर एंडिंग द चैप्टर विद द मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस जो कि हर बार बोर्ड के पेपर में और पीटीज में पूछे जाते हैं और पूछे जाएंगे. लेट्स स्टार्ट विद प्रिवेंशन ऑफ कोरोजन. कोरोजन हम पिछली वीडियो में जैसे कि डिस्कस कर चुके हैं. इट इज नथिंग बट व्हेन द आयरन गेट्स इन कांटेक्ट विद द मॉइस्चर एंड ऑक्सीजन प्रेजेंट इन द एयर एंड फॉर्म्स अ लेयर ऑफ ऑक्साइड ऑन इट्स सरफेस. सो दैट इज व्हेन वी कॉल दैट इट हैज गॉट कोरोडेड. कोरोजन के मल्टीपल फॉर्म्स होते हैं. फॉर एग्जांपल सिल्वर कम्स इन कांटेक्ट विद हाइड्रोजन सल्फाइड एंड फॉर्म्स अ ब्लैक लेयर ओवर इट्स सरफेस. Number third is copper comes in contact with oxygen, forms a black colored copper oxide layer on its surface. Number fourth, copper also comes in contact with carbon dioxide present in the atmosphere and forms a green coating over its surface. ठीक है, तो आज हम देखेंगे प्रिवेंट कैसे करते हैं. फर्स्ट मेथड प्रिवेंशन ऑफ कोरोजन में सबसे पहला आएगा हमारा अलोइंग. अलोइंग क्या है? मिक्सिंग ऑफ टू or more metals and non-metals. Number second, galvanization. Galvanization क्या है? Coating of zinc. Third, electroplating. Coating of any metal. Fourth, greasing, painting, oiling, etc. ये सारी छोटी छोटी चीजें जितनी भी हैं ये सारी प्रिवेंशन ऑफ कोरोजन में आ जाएंगी हमारी. दैट इज इट. दैट इज द मोस्ट इजीएस्ट टॉपिक. 2 मार्क के लिए बहुत कॉमनली पूछा जाता है. हाउ डू यू प्रिवेंट द कोरोजन ऑफ आयरन? तो ये आपका आंसर है. गैल्वेनाइजेशन करेंगे, इलेक्ट्रोप्लेटिंग कर देंगे, अदरवाइज विल डू अलॉइंग और वी कैन डू ऑयलिंग, ग्रीसिंग, पेंटिंग. गॉट माय पॉइंट? नाउ लेट्स कम ऑन रैंसिडिटी. व्हाट इज रैंसिडिटी? Just how the metals come in contact with the moisture present in the air or oxygen present in the air and gets corroded, the same way the food item containing oils and fats also come in contact with the moisture and oxygen present in the atmosphere, and this leads to the change in texture, taste and smell of the food particle. खाने का टेक्सचर, टेस्ट एंड स्मेल चेंज हो जाता है. आप लोगों ने नोटिस किया होगा घरों में कभी कभार कोई ऐसी तली हुई चीज बनती है and after some time when you eat it, it becomes a little soggy and there is a different type of smell which starts coming out from the food. That is called rancidity. अब यहाँ पर क्या है कि इसके प्रिवेंशन बहुत इजी है. फॉर एग्जाम्पल आप लोगों ने नोटिस किया होगा कभी कभार हम चिप्स देखते हैं पैकेट. द पैकेट इज एक्चुअली फिल्ड विद 80% एयर. That air is nothing but nitrogen gas, and nitrogen gas here is responsible for preventing those oil fried chips from coming in contact with the oil, oxygen and moisture present in the air. So that in turn is actually preventing the food particle from getting rancid. Getting my point? So what is the first prevention method? Nitrogen gas. So इससे रिलेटेड एक क्वेश्चन भी आपके एक्सरसाइज में, why do we flush the packets of chips with nitrogen gas? We flush the packets with nitrogen gas only to prevent rancidity in them. Number second, खाने को फ्रिज में रख सकते हैं, एयरटाइट कंटेनर्स में रख सकते हैं, उनके अंदर प्रिजर्वेटिव्स डाल सकते हैं. ये सारे के सारे हमारे रैंसिडिटी प्रिवेंट करने के मेथड्स हैं. आई एम श्योर ये बहुत ही कॉमन एंड क्लियर मेथड्स हैं, इसमें कोई ज्यादा रॉकेट साइंस नहीं है. ठीक है. नाउ विद दिस वी आर एक्चुअली डन विद दिस चैप्टर, बट एज आई ऑलरेडी प्रॉमिस्ड यू फ्रॉम द स्टार्ट ऑफ द चैप्टर, I will be giving you some important questions and those important questions are a must, चाहे वो आपका फाइनल हो चाहे फाइनल से पहले हो. So let's see those questions. Starting से start करते हैं. The first thing that we come up in this chapter is what do you mean by exothermic reaction? हमेशा पूछा जाता है, हमेशा पूछा जाएगा. with one example chemical reaction आपको देना है. That is like मैं आपको बता दूं quick lime with water का example is the best. CaO plus H2O forming calcium hydroxide which is slate lime. ठीक है. नंबर सेकेंड क्वेश्चन आपकी बुक में कई बार रिपीट हुआ है, ये पेपर्स में भी है. क्या क्वेश्चन है?
The compound X is coming in contact with water and releasing immense amount of heat, and the product in the end is used for whitewashing. The same answer which I gave for the previous one. Quicklime coming in water giving slaked lime. Clear? Third question what we can do here is the most common question which I have realized बच्चों के पेपर देख के is two observations which shows you, which comes in front of you when you decompose ferrous sulfate. FeSO4 के decomposition की two observations बतानी है. इसका आंसर बहुत ही clear and simple है. FeSO4 is a green colored salt. The moment you start heating it, it first turns into white, later turns into reddish brown ferric oxide. First observation. Second observation, this decomposition leads to the release of two very highly pungent gases, SO2 and SO3. Done till here? Let's move ahead. Blue colored, beautifully blue colored copper sulfate solution turns green when we keep two iron nails in the solution. Why? What type of reaction is this? See, you should know here कि CuSO4 बहुत ही सुंदर ब्लू कलर का सोल्यूशन है, उसमें दो लोहे की कील डाल दोगे तो इट इज गोइंग टू टर्न green. Why? Because CuSO4 plus Fe giving you FeSO4 plus Cu. So now that green colored solution is what? It is FeSO4. Correct? Next. अब यहाँ पर आता है एक तुम्हारा रिएक्शन जिसमें कि तुम किसी मेटल को एसिड के साथ रिएक्ट करो. फॉर एग्जांपल जिंक इज रिएक्टिंग विद हाइड्रोक्लोरिक एसिड, इन टर्न गिविंग अस जिंक क्लोराइड एंड हाइड्रोजन गैस. How will you test the presence of hydrogen gas? How do you know that the gas which is evolved is hydrogen gas? By testing it in the presence of burning flame, which is going to produce what type of sound? Pop sound. कहीं पे भी किसी भी जगह अगर हाइड्रोजन गैस रिलीज हो रही है, उसके पास अगर आप बर्निंग कैंडल लेकर आओगे, then the burning candle की flame is going to give you what sound? Pop sound. That is the testing. ठीक है. Next that we have is oxidation का एक जरूर आता है कि name the oxidizing agent, name the reducing agent, what is getting oxidized, what is getting reduced. I have already given this to you in the previous video. Please do check it out. ठीक है. So I am sure अगर आप ये वाले सारे questions कर लेंगे, your exams are going to be blissful. I hope you all understood the chapter. Stay tuned for the first chapter of physics in the next video, which is light, reflection and refraction. Bye.